Hello students, I hope I'm audible. So to begin with this, let me first of all get the confirmation from you guys that I'm audible so that we can begin with this lecture. Hello everyone, I welcome all of you to this session of signals and systems, in which the topic that we are going to look after is energy and power signal properties. So this is very important topic of signals and systems. I hope I'm audible enough. So I guess we should begin with this session. So I guess we should begin. So the topic that we are going to start with is energy and power signals. So this is a very important classification of energy and power signal. Let me tell you, a signal can be possibly energy signal, or it can be power signal, or at the most it can be neither energy nor power signal. But let me tell you very clearly that there is no signal exist which is energy also and which is power also. I hope you got my point. If not to worry, I'll make a note of it what I said. So as I said, that signal can be either energy signal, or it can be a power signal, or else it can be neither energy nor power signal. So as I said, let me just make a note of it. So signal is classified in three categories here. Either it is energy signal, or as I said, it can be a power signal. And third possible type in terms of energy and power, I can say it is neither energy nor power signal. I hope you understand my point. Okay. So it can be neither energy nor power signal. But let me tell you, there is no signal which you can say it is energy signal as well as power signal. I hope you get my point. So when it is energy signal, very simple, very simple. See, let me tell you, there are predetermined formulas to calculate energy and power. I repeat, there are predetermined formulas to calculate energy and power. So in case after applying the formula, if you get energy finite, if you get the value of energy to be finite, then I would say it is an energy signal. So this indicates it is energy signal. So for a particular signal, you applied the formula of energy, and then if you get energy to be finite, then it is called as an energy signal. On the next side, suppose if you apply the for power signal, and if you get power to be finite, then we say that it is a power signal. So for this purpose, if you get power to be finite, then the respective signal is said to be what signal? Power signal. I hope guys you are watching this video. So in case if you are watching, guys, share this link with your friends, so they will also get benefited, those who are preparing for GATE exam. And now let me come to the very third type, that is neither energy nor power signal, in which you will always get energy infinite. Okay, let me just correct this. And power also infinite. So energy as well as power, if you get infinite, both of them are infinite,
then this category occurs, that is neither energy nor power signal. But let me tell you, you will never ever get energy to be finite as well as power to be finite. There is no signal in the world that exists which will give you energy also finite and power also finite. And it is just because there is some relation between energy and power which never let this happen, that energy also become finite and power also becomes finite. This will never ever happen. So that we will see when we will actually relate energy with power. Okay, so in that case we will see. So first of all, let us see how to calculate the energy. Then we will see how to calculate the power. And after that, we will start with the problems where probably we will try to identify whether the given signal is energy signal, power signal, and as I said, the very third category, that is neither energy nor power signal. So let us begin with calculation of energy. So let's see energy signal classification, guys. Let me just assume some random signal here. Okay, I'm just assuming some random signal here. This is x of t variation, okay, with respect to time. And let's say I'm just taking some random, intervals here, like I'm taking minus t here. Okay, let me take this capital T here. Let me take some t1 here. Let me take some t2 here. Hey, what I'm doing, actually what I'm doing is I'm just taking some random time instants, okay, on the time scale, because I know that whatever instant that I will assume on the x-axis will have the unit as what? Seconds. So what I'm actually trying to do, guys, I'm actually trying to calculate the energy. I repeat, what I'm trying to calculate, I'm trying to calculate the energy for a given signal, guys, for a given signal. Okay. Now, what you have to do, let us assume that I have to calculate the energy. So one might ask, boss, if you want to calculate the energy, for what time interval you want to calculate the energy? Or let me just put it in the other way, that now this is the whole x of t given, boss, but then you want energy of complete x of t, or you want energy of a part of energy, or a part of signals energy. So let us assume the requirement is that I have to calculate the energy from T1 to T2. I hope you are getting my requirement. I hope you are getting my requirement, and I don't want energy of the complete signal, but I want to calculate the energy from T1 to T2. So this is the first case, guys. This is the first case that I want to calculate the energy from T1 to T2. I hope that you have understood the requirement, guys. So in that case, energy formula is very simple. Okay, just integrate over the interval, from where to where you want the energy. So what I'll do first, I'll just first of all mention that I want to calculate the energy between the interval from t1 to t2. So I want to calculate the energy within interval from t1 to t2, guys, from t1 to t2. In that case, how do I do this now? How do I do this? Simply integrate over the time interval from t1 to t2, from t1 to t2, and just take mod of x of t and square it and dt. That's it. And the unit is joules. The unit is joules. I hope you understood that. Let me know, guys, if you have some problems so far. What I did, I'm just trying to calculate the energy of the given signal x of t, guys. Then the question is, you want energy of the complete signal, or you want energy of a part of signal? So I want the energy to calculate it over a part of signal. So this is my requirement, guys. So I'm just going from T1 to T2. Isn't it? I'm going from T1 to T2. So I'm trying to get my energy from T1 to T2. So I'm just, trying to get the integration over T1 to T2. Mod of x of t whole square dt. Okay, I hope you get this point, guys. I hope you get this point. This is how we calculate energy. Yes, of course I can talk in Hindi if you don't understand this. So energy calculate करना है हमको. ये x of t सिग्नल हमको दिया था मोहन, और ये x of t सिग्नल का एनर्जी हमें कैलकुलेट करना था फ्रॉम t1 to t2. तो मैंने ये कहा
कि आप mod of x of t whole square लेना, ये पहला स्टेप है. And since you have to calculate energy from t1 to t2, तो इंटीग्रेट करो, लोअर लिमिट रखो t1, अपर लिमिट रखो t2. That's it, and your energy calculation is done. So Mohan, I just want to ask you one thing. What if I want to change the mode? I want to calculate the energy from interval minus t to t. तो इस बार मुझे जो एनर्जी कैलकुलेट करना है वो माइनस टी से लेकर प्लस टी तक कैलकुलेट करना है. सो लेट मी जस्ट सी विद इन द सिग्नल माइनस टी से लेकर प्लस टी. आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस. तो ये जो हाईलाइटेड सिग्नल है बॉस, for this I have to calculate the energy. So what should be the modification in the formula? What should be the modification in the formula? Very simple question I have asked. Tell me. Yes मोहन, क्या आप अभी आंसर कर सकते हो इसका? अगर मुझे माइनस टी से लेकर टी तक कैलकुलेट करना है एनर्जी. ओके, लिमिट आपको लेना है माइनस टी से लेकर टी. वेरी गुड, वेरी गुड, यू आंसर्ड इट वेरी वेल. So you have to again integrate it from minus t to capital T, mod of x of t whole square dt, and of course the unit is joules, क्योंकि energy का unit joules ही होता है. Yes or no? Very good. So next now, so let's say if I want to calculate the energy for complete x of t. अगर मैं energy calculate करना चाहता हूँ complete x of t का, तो उस वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा? Okay, now this is something important. अब मुझे एनर्जी कैलकुलेट करना है गाइस. ओके, एनर्जी कैलकुलेट करना है फॉर कंप्लीट एक्स ऑफ टी. तो मुझे इंटरवल कहां से कहां तक लेना है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक का मुझे एनर्जी चाहिए, isn't it? So what I'll do, see carefully. I'm just going to do this very smartly. ठीक है, स्मार्टली करूंगा मतलब मैं क्या करूंगा? तो मैं यही करूंगा, मैं एक्चुअली एनर्जी कैलकुलेट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं करूंगा. मैं एनर्जी कैलकुलेट करूंगा फ्रॉम माइनस टी से लेकर टी तक ही, लेकिन मैं ये कहूंगा where my t is tending to infinity. Come on, it is one and the same thing. It is one and the same thing. कैसे one and the same thing? Let us see. So मैं देखो वापस यहाँ पर लिख रहा हूँ, my limit t is approaching to infinity. अब एनर्जी फ्रॉम माइनस टी से लेकर टी तक क्या था? तो देखो ये था, तो इसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ वहां पर ऊपर. सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम माइनस टी टू टी, mod of x of t whole square dt, and of course the unit will become what? Joules, guys. Unit will become joules. I hope you got that. And of course student कहते हैं कि सर ये लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी क्यों लिख रहे हो आप? वैसे तो आप इंटीग्रेट भी कर सकते थे ओवर माइनस टी टू टी. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा अलाउड है करना कि मैं डायरेक्ट टी का वैल्यू वहां पर इंफिनिटी डाल रहा हूँ, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में इंटीग्रेट करूंगा? कैन आई राइट एनर्जी for a complete signal as integration from minus infinity to infinity mod of x of t whole square dt? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? So मेरा क्वेश्चन जो है I guess उसका आंसर सिर्फ yes और no में है guys. So I want you people to answer. Come on guys. Come on guys. What is wrong with you? You can answer me. Of course, yes. I'm teaching from gate point of view only. Yes, Brijwasi. What you saying? Okay. Try to understand your question. Okay. You can see the heading. It is for gate only. What is going on is only for gate. All the live lectures we are taking only for gate, guys. Okay. So here there is no harm, but you can substitute t value equal to infinity, and you can straight away write it from minus infinity to infinity mod of x of t whole square dt. I hope you understand that. And that's the energy signal, guys. That's the energy signal. And again, the unit is joules, right? Next, I'm going next. And I'm just going for, power calculations. And once you understand energy calculation, power calculation, then we can start with the problems.
So for this power calculation, again, I'm just taking the same signal. Let me take the same signal. Okay, in which if you remember, I took it as minus t से लेकर t यहाँ तक लिया था मैंने, और फिर मैं यहाँ पर t1 और यहाँ पर t2 लिया था. Fine. So similar way, I'll go. Let us assume that, okay, let me just write it properly. This is x of t signal with respect to time. Fine. अब मुझे पावर कैलकुलेशन करना है, अब मुझे एनर्जी कैलकुलेशन नहीं करना है, मुझे पावर कैलकुलेशन करना है फॉर गिवन एक्स ऑफ टी. तो मेरे पास कई ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन ये है कि मैं पूरे एक्स ऑफ टी का ही पावर निकालूं, या फिर मेरा रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि नहीं, मुझे पावर जो है एक्स ऑफ टी, कंप्लीट एक्स ऑफ टी का नहीं चाहिए, तो पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी का पावर कैलकुलेट करना है. लेट अस एज्यूम मुझे t1 से लेकर t2 का पावर कैलकुलेशन करना है. सो आई होप यू अंडरस्टूड. सो I don't have to calculate the power of complete x of t, but I have to take the power of only for a part of x of t, which is varying from t1 to t2, guys. In that case, how to go about it? So let me first of all tell you the energy and power relation. Check it out. Suppose if you want power calculation for given x of t within the interval from t1 to t2, अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है within interval t1 to t2, it is same as energy over t1 to t2. देखना ध्यान से, energy over t1 to t2 divided by the complete time interval for which you are calculating the power. मैं रिपीट करता हूं, divided by वो पूरा टाइम इंटरवल जिसके लिए आप पूरा पावर कैलकुलेट कर रहे हो. तो यहां पर अगर आप टाइम इंटरवल देखो तो ये टाइम इंटरवल क्या होगा? Can anybody tell me? ये टाइम इंटरवल क्या होगा guys? It's very simple question I have asked. T1 से लेकर T2 तक का टाइम पीरियड क्या होगा? इससे और सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या? ब्रिजवासी, are you there? Mohan, Brijwasi, what happened with other people? Come on guys, you're just watching this video, you're not answering anything. How to get the power within the time interval from T1 to T2? It is just simple energy signal only divided by the total time period. So time period between T1 to T2, it's simply T2 minus T1 guys, right? तो इसके बीच में जो इंटरवल होगा वो क्या होगा? T2 minus T1 तक का होगा. That's it. That's it. So this is equal to what? 1 upon T2 minus T1. और आपको अगर एनर्जी सिग्नल याद है, it is from T1 to T2 integration mod of x of t whole square dt. That's it. And of course the unit would be watt. Okay, power calculation करोगे तो watt में आएगा. I hope everybody is understanding this. So let me change the track. Let's say मुझे power calculate करना है, okay, within the interval from minus t to capital T. Minus t से लेकर capital T तक calculate करना है guys. Minus t से लेकर plus t. Check it out. Minus t से लेकर plus t मतलब ये interval हो गया. और ये इंटरवल का मुझे अगर पावर कैलकुलेट करना है, अगेन गाइस सेम केस, अगेन सेम केस आई एम गोइंग टू डू गाइस. कम ऑन, कैन एनीबॉडी टेल मी क्या करना चाहिए? यस, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर मुझे पावर कैलकुलेशन करना है विद इन द इंटरवल फ्रॉम माइनस टी टू कैपिटल टी, तो इस वक्त मैं कैसे कैलकुलेट करूं? अगेन सेम एनर्जी बाय टाइम. तो मैं माइनस टी से लेकर टी तक चाहिए पावर, लेकिन मैं कैलकुलेट करूंगा एनर्जी और मैं डिवाइड करूंगा बाय द टोटल टाइम इंटरवल. ओके, सो इट विल बी अगेन सेम एनर्जी मेजर्ड बिटवीन माइनस टी टू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल गाइस. टोटल टाइम इंटरवल फ्रॉम माइनस टी टू कैपिटल टी, कॉमन सेंस, it will be 2t. So I can write my power from minus t to capital T as, come on, 1 upon 2t integrating over minus t to t mod of x of t whole square dt. And of course the unit is what? So what is the unit? Okay, so I hope you are understanding this. Let's say if I want to now calculate power of the complete x of t, which may be like never ending signal. So I don't know from what time interval it is starting and at what time interval it is ending. So I would like, so I would be integrating from minus infinity to infinity. Okay, so that is the one option for me. Or else I'll go by the traditional way. How do I calculate the power? By referring the respective energy. So I'll go with the same flow. Okay,
So I'll go for power calculation from minus infinity to infinity, guys, from minus infinity to infinity. So again, how to get it? If you remember, the similar way we calculated the energy, in a similar way we calculated the energy. So again, it is actually energy calculation over minus t to t divided by the total time period, which is 2t. And here I'll say that limit t is approaching to infinity. Very simple. So next, if I want a power over the interval from minus infinity to plus infinity, it will be limit t tends to infinity 1 upon 2t. अब इसका एनर्जी कैलकुलेशन आपको पता है. Okay, how do we do that? Okay, come on. Minus t से लेकर t mod of x of t whole square dt. I hope you understand that. I hope you understand that. So now the question is, क्या हमको t tends to infinity यहाँ पर substitute करना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर? Okay, can anybody tell me, is it possible to substitute t equal to infinity in the lower limit and upper limit of integration? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? Come on guys, who is going to answer me this question? सीधा सीधा लिखा है कि जहां पर कैपिटल t है, you have to substitute as infinity. So is it possible to keep lower limit and upper limit capital T as infinity? Again, जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है guys, it is having answer as in terms of yes or no. So obviously आपको ऐसा कुछ करना नहीं है. इसका रीजन एकदम सिंपल है. देखो, आपको ये जो इंटीग्रेशन है, इसका जब इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे, इट माइट हैपन कि आपको इन टर्म्स ऑफ टी मिलेगा. फॉर एग्जांपल 6t ऐसा कुछ मिला. अब आप देख रहे हो ये डिवाइडेड बाय 2t भी है, तो डिवाइडेड बाय 2t है, तो यहाँ पर टी कैंसिल हो जाएगा और आपको यूनिट आंसर क्या मिलेगा, 3 वॉट मिलेगा. ये एक पॉसिबिलिटी है. या फिर ऐसा भी हो सकता है, सी वी डोंट नो व्हाट x ऑफ t इज. इंटीग्रेशन का आंसर आपको क्या मिलेगा, वी रियली डोंट नो. वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया गाइस. सो इट माइट हैपन कि आपको इसका आंसर कुछ कांस्टेंट मिले. फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा मिल गया, 60 मिल गया आपको. ओके, डिवाइडेड बाय क्या है, 2t है. लेकिन जहां पर हम t का जो वैल्यू है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी कहते हैं, तो जैसे ही t का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया गाइस, तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और उसकी वजह से ये पावर क्या हो जाएगा, 0 वॉट हो जाएगा. ओके, सो गाइस वी डोंट नो कि हमें एग्जैक्टली आंसर क्या मिलेगा, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं पता है. And that is the reason why boss, it is advisable that you don't substitute t value equal to infinity in lower limit and upper limit. इसलिए मैं आपको फाइनल फॉर्मूला जो बोलता हूँ पावर का, वही आप यूज कीजिएगा. ओके, सो पावर फॉर्मूला इट्स सिंपली लिमिट कैपिटल T टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 upon 2t integrating over minus t to t mod of x of t whole square dt. तो यही फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है. The unit is watt or watt. Okay, so I'll give you the very final formula for energy and power, which you should follow all the time for solving all the problems. And once you understand that, then we can start with the problems, as I said. So finally, जैसे मैंने आपको कहा था, मैं आपको फाइनल फॉर्मूला दूंगा. एनर्जी का फॉर्मूला integrating over minus infinity to infinity mod of x of t. Okay, so let me just write it the way I have taught you. So energy of the signal is what? Come on, it is limit capital T tends to infinity minus t से लेकर t mod of x of t whole square dt. ये आपको एनर्जी का फॉर्मूला दिया मैंने. और पावर का फॉर्मूला जब आपको कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, वही लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 upon 2t माइनस t से लेकर t mod of x of t whole square dt. Isn't it? Next, अब इसके अंदर
आप t वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी इसमें डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके कोई हार्म नहीं है. सो यू कैन नाउ राइट एनर्जी फॉर्मूला एज integrating over minus infinity to infinity mod of x of t whole square dt. इसका यूनिट क्या होगा? जूल्स होगा. और पावर का यही फॉर्मूला फाइनल होगा और जिसका यूनिट क्या होगा? वॉट होगा. I hope you understand, guys. I hope you guys have understood this. Okay, as I said that once you understand this, we can start with the problems now. Okay, we can start with the problems now. So let me know, guys, if you have some problems in this. Else, we are going to start with the numerical based on energy and power. And obviously, the numerical would be like this: identify whether the given signal is energy or power. Identify whether the given signals are energy or power. तो मैं आपको बता देता हूँ. फाइनली, जब एनर्जी इज फाइनाइट, याद रखो, जब एनर्जी इज फाइनाइट, पावर इज ऑटोमेटिकली जीरो. जब एनर्जी इज फाइनाइट, power is automatically zero for a given x of t signal. Such signal is known as energy signal. Such signal is known as energy signal, guys. And let me tell you, if power is finite, if power is finite, तो उसकी वजह से एनर्जी becomes infinite. और ऐसे सिग्नल को कहते हैं पावर सिग्नल. ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं? पावर सिग्नल कहते हैं, गाइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाई एनर्जी इज फाइनाइट देन पावर इज जीरो. और पावर फाइनाइट होने की वजह से एनर्जी क्यों इनफाइनाइट होता है? सो अगेन, ये जो रीजन है इसके पीछे, ये रिलेशन जो है ना एनर्जी और पावर के बीच में, इसकी वजह से है. ओके, सो लेट मी टेल यू गाइस, लेट मी टेल यू, इफ यू सी दी एनर्जी और पावर के बीच में रिलेशन, तो पावर के बीच में और एनर्जी के बीच में ये रिलेशन है, पावर इज ऑलवेज एनर्जी अपॉन टाइम. So power is nothing but energy upon time, where time approaches to what? Infinity. Where time approaches to what? Infinity. तो एक बात तय है कि अगर अगर केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, अगर एनर्जी का वैल्यू फाइनाइट है, तो देखना ध्यान से, अगर ये फाइनाइट है, ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, डिवाइडेड बाय क्या है? कम ऑन, डिवाइडेड बाय टी है, और टी का वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी है. सो फाइनाइट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी. कम ऑन गाइस, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज व्हाट गाइस? कम ऑन, टेल मी. कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने. अगर एनर्जी फाइनाइट है लेकिन उसकी डिवाइडेड बाय जो कैपिटल टी लिखा है वो इन्फिनिटी है, सो फाइनाइट वैल्यू, सम फाइनाइट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, व्हाट इज द आंसर? I can expect this answer from you guys. अगर एनर्जी फाइनाइट है और डिवाइडेड बाय कैपिटल टी किया है, अगर वो इंफिनिटी है, सो फाइनाइट डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होता है गाइस? कम ऑन, कांट यू टेल मी द सिंपल रेशियो वैल्यू? So anything divided by infinity, common sense, it is zero. So power becomes zero. And obviously, you can understand from the formula, when power is finite, energy has to be infinite. Okay, that you can relate from the given formulas. Okay, so I'll start with the first problem, guys. So the question is, identify whether the given signal is energy or power.
So now this is the signal and we have to identify whether it is energy or power. Okay, तो इसमें एक ही चीज है कि आप एनर्जी सबसे पहले कैलकुलेट करो. अगर आपको फाइनाइट मिलता है तो स्ट्रेट अवे एनर्जी इज फाइनाइट, कॉमन सेंस पावर इज जीरो एंड द गिवन सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल, राइट? So let's do that. Okay, so I'll just go with the formula, guys. So let me just calculate the energy, where energy is integrating over minus infinity to infinity mod of x of t whole square dt. अब हमको पता है कि इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा सिग्नल एक्चुअली फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है. यहाँ पर करेक्ट है, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल इन द सेंस इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड एंडिंग एट प्लस इन्फिनिटी, गाइस. ओके, सो एज यू कैन सी कि कोई मतलब नहीं है यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक लेना. तो इसको इनफैक्ट मैं दो इंटीग्रेशन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. एक इंटीग्रेशन में लूंगा -3 से लेकर -1 तक, और दूसरा इंटीग्रेशन में लूंगा 3 से लेकर 5 तक. क्यों? क्योंकि 5 के बाद इन्फिनिटी तक ये सिग्नल जीरो है, बिटवीन -1 से लेकर 3 तक ये सिग्नल जीरो है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 3 ये सिग्नल जीरो है. तो ये जो सिग्नल जो नॉन जीरो है, इट इज बिटवीन ओनली टू इंटरवल्स फ्रॉम -3 टू -1 एंड 3 से लेकर 5 तक. So let me first of all mathematically describe this signal, guys. Okay, so what I can see by observation that x of t signal, this x of t signal value, as you can see, it is -6. It is -6. Within what interval? From -3 to -1, isn't it? And same x of t signal, guys, it is 5. Within with what interval, guys? 3 to 5. So within the interval from 3 to 5. करेक्ट. तो ये x ऑफ टी का वैल्यू मिल गया मुझे, पॉसिबल वैल्यूज मिल गए दो इंटरवल के बीच में. एम आई राइट? नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा, तो मुझे पता है मुझे x स्क्वायर ऑफ टी करना है. x स्क्वायर ऑफ टी, मॉड ऑफ x ऑफ टी का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर ऑफ टी करना है. करेक्ट है. सो विद इन इंटरवल फ्रॉम -3 टू -1 व्हाट आई कैन नोटिस, इट इज -6 का स्क्वायर dt प्लस, अब 3 से लेकर 5 के बीच में अगर आपने इंटरवल के अंदर देखा तो x ऑफ टी का वैल्यू है 5, तो मैं 5 का स्क्वायर dt लिखूंगा. और बस अब मुझे तो नॉर्मल मैथमेटिकली सॉल्व करना है इसको. इट इज अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, गाइस, इजंट इट? सो आई नो दैट -6 का जो स्क्वायर है वो होगा +36, एंड सिंस 36 इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ t, हम बाहर लेंगे उसको. और फिर हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 प्लस 5 स्क्वायर 25 कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रल, और इंटीग्रेशन आएगा t, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा 2. So it is how much? Come on, it is 72 plus 50, okay, which comes out to be 122. तो यूनिट तो आपको पता है, जूल्स है. देखना ध्यान से, एनर्जी जो है, जो एनर्जी आपको मिला है यहाँ पर, करेक्ट है, वो क्या है गाइस? इट इज फाइनाइट इन नेचर, गाइस. इट इज फाइनाइट इन नेचर. तो अगर एनर्जी फाइनाइट है तो हमको पता है सच सिग्नल्स आर कॉल्ड एज एन एनर्जी सिग्नल. तो याद रखो, अगर एनर्जी फाइनाइट है, okay, let me conclude here. What you got? 122 joules मिला है आपको, करेक्ट है. 122 joules मिला है, guys. It means energy is said to be finite. तो कॉमन सेंस है, पावर का वैल्यू 0 हो जाएगा. एनर्जी 0, सॉरी, एनर्जी फाइनाइट, पावर इज 0, therefore it is with signal, then we say it is energy signal. Okay, so guys, let me tell you, in the gate exam we really don't have so time. Okay, इतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास कि हम इंटीग्रेशन निकालेंगे और फिर उस इंटीग्रेशन का आंसर देखेंगे whether it is finite or infinite, and accordingly we will take the decision. No, we have no time, guys. Okay, so we should be capable enough to only observe the given signal x of t and come to the conclusion immediately कि ये एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है. ओके, वेरी सिंपल. तो आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही बताना है कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है. कैसे? वेरी सिंपल गाइस, वेरी वेरी सिंपल. तो सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करो, ये जो सिग्नल है ना, ये पर्टिकुलर में ये सिग्नल के बारे में बात कर रहा हूं. सो व्हाट यू थिंक, द गिवन x ऑफ t सिग्नल इज अ फाइनाइट सिग्नल और इनफाइनाइट सिग्नल? मतलब x ऑफ t में आप जो भी नेचर देख रहे हो, कहीं पर भी एम्पलीट्यूड इंफिनिटी तक जा रहा है क्या? आंसर इज नो. तो ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं बाउंडेड सिग्नल. आई रिपीट, ऐसे सिग्नल को हम क्या कहते हैं? ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं बाउंडेड सिग्नल. सो फर्स्ट नेचर में x ऑफ t का देख पा रहा हूं कि ये जो सिग्नल है, इट इज बाउंडेड इन नेचर. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई अंडरस्टूड, गाइस. इट इज बाउंडेड सिग्नल. मतलब नोवेयर
amplitude is reaching to infinity guys, nowhere amplitude is reaching to infinity. तो मुझे ये समझ में आया guys that this is a bounded signal. Second what I should understand, second is that is it infinite duration signal or finite duration signal? देखो क्या ये सिग्नल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक प्रेजेंट था? नहीं। तो ये सिग्नल अगर आप देखोगे तो -3 से लेकर चालू होगा और 5 तक खत्म होगा। इसका मतलब इसका जो ड्यूरेशन है गाइस इट इज फाइनाइट। करेक्ट है, इसका जो विड्थ है ये सिग्नल का वो फाइनाइट है, मतलब दिस इज अ फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर सिग्नल आपका बाउंडेड भी है और फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल भी है तो ऐसा सिग्नल हमेशा हमेशा एनर्जी सिग्नल होगा। तो ऐसे सिग्नल्स हमेशा क्या होंगे? एनर्जी सिग्नल्स होंगे। सो लेट मी जस्ट गिव यू सम टाइप्स। ओके, लेट अस से you have this kind of signal. देखना ध्यान से, ये 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं। ये तीनों एग्जांपल में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है गाइस? ये तीनों में एक चीज कॉमन है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, ये तीनों सिग्नल, ये जो तीनों सिग्नल है ये तीनों के तीनों सिग्नल बाउंडेड सिग्नल है। चेक इट आउट, कहीं पर भी एम्पलीट्यूड आपको इंफिनिटी दिखाई नहीं देगा। एवरीवेयर यू सी एनी मोमेंट ऑफ टाइम, ओके, कहीं पर भी एम्पलीट्यूड आपको फाइनाइट ही दिखेगा। फाइनाइट मींस इट इज नॉट इनफाइनाइट, दैट्स इट। ओके, तो फाइनाइट का डेफिनेशन कुछ और होता नहीं है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नोटिस दैट दीज आर व्हिच सिग्नल्स, these are bounded signals guys, these are bounded signals. And now if you look at the width, okay, पहला जो सिग्नल है उसका लेट्स से ड्यूरेशन है W1, ये जो दूसरा सिग्नल है इसका विड्थ ड्यूरेशन है W2, और ये जो तीसरा सिग्नल है इसका मान लीजिए विड्थ है W3। तो W1 W2 W3 डेफिनेटली वैल्यूज में अलग अलग है, लेकिन वापस तीनों में ये चीज कॉमन है दैट विड्थ फॉर ऑल थ्री सिग्नल्स इज फाइनाइट इन नेचर। तो मैं इसको कह सकता हूं दैट these are what, these are finite duration signals. और आपको पता है जब भी सिग्नल बाउंडेड सिग्नल है एज वेल एज फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है तो ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं एनर्जी सिग्नल। दैट्स इट। सो देखिए, कोई भी ऐसा सिग्नल आपने देखा जो आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज एनर्जी और पावर सिग्नल, एटलीस्ट एनर्जी सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई करना है यह आपको अच्छे से पता है कि उसका फाइनाइट ड्यूरेशन होना चाहिए, बाउंडेड सिग्नल होना चाहिए। That's it guys. Okay, so immediately after this I'll move to the next problem. So let me go to the next problem. E to the power minus at u of t, हमें आइडेंटिफाई करना है whether this signal is energy signal or power signal. Okay, so again immediately without wasting time मैं एनर्जी का यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा, इंटीग्रेटिंग ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर dt। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, e टू द पावर माइनस एटी का स्क्वायर करना है। सो e टू द पावर माइनस एटी यू ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस एटी यू ऑफ टी, देखिए दो बार लिखा क्योंकि स्क्वायर करना है dt। तो याद रखिए u ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय u ऑफ टी, सिंपल गाइस, u ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय u ऑफ टी इज अगेन अ स्टेप सिग्नल, दैट इज u ऑफ टी ओनली, बट e टू द पावर माइनस एटी मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस एटी becomes e to the power minus 80 का स्क्वायर, और e to the power minus 80 का स्क्वायर is e to the power minus 280 guys. Okay, don't forget our limit from minus infinity to infinity. So finally we have an integration over minus infinity to infinity e to the power minus 280 u of t dt. ये हो गया हमारा एनर्जी, करेक्ट है। सो नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड आई विल रिपीट फ्रॉम द लास्ट स्टेप। ओके, सो फार हमको क्या मिला है, एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 280 मल्टीप्लाइड बाय u ऑफ t dt। अब आपको पता है u ऑफ t एक ऐसा सिग्नल है गाइस जो प्रेजेंट कहां से कहां तक होता है, कम ऑन, जीरो टू इन्फिनिटी तक, एंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ये क्या रहेगा, जीरो। एंड यू नो दैट because of the presence of u of t it is going to change the limit of integration, it will change the limit of integration from, very simple, come on, 0 to infinity e to the power minus 280 dt, that's it। ये होगा आपका एनर्जी सिग्नल।
फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, ओके, इट्स अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन नाउ, e टू द पावर -2at इसका इंटीग्रेशन आएगा डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, ओके, और अ कोएफिशिएंट ऑफ t व्हिच इज -2a, और आपका लोअर लिमिट है 0, हायर लिमिट है इंफिनिटी. सो व्हेन आई टेक दिस -1/2a आउट, अंदर हमको क्या करना है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है. सो इट बिकम्स e टू द पावर -infinity minus e टू द पावर 0. e टू द पावर -infinity 0, बिकॉज एनीथिंग रेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी होगा तो इंफिनिटी होता है, बट एनीथिंग रेस टू -infinity 0 होता है गाइस. एंड e टू द पावर 0 क्या होगा, 1. लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है देखो, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, एंड फाइनली वी हैव एनर्जी इक्वल टू व्हाट, 1/2a गाइस. एंड ऑफ कोर्स द यूनिट इज जूल्स. I hope you understood, guys. So let me know, guys, if you're understanding this, how energy for e to the power -2at u of t is 1/2a. I hope you're understanding this, guys. If you're understanding, guys, please let me know through the text that you are understanding this. So one thing is very clear that energy for this is finite, guys. It's finite. तो energy अगर finite है तो common sense ये कहता है कि इसके लिए power जो आएगा वो 0 आएगा, correct? और वो relation से आपको पता है कि power 0 कैसे आता है, guys. Okay. So if energy is finite, power is always 0, and that signal is said to be what signal? Come on, guys. Energy signal. तो ये energy signal है, right? So I hope you understood this. So, guys, I hope you understood this. And if you have some doubts, now I'm waiting for your doubts. If you have some doubts, you can definitely ask me. So, let me know, guys, if you have some doubts in this. So, in the shortcut method, how to identify whether this signal is energy or power signal? Okay, very simple. So, if you look at the nature, okay, the given signal in the previous question was x of t equal to e to the power -80 times u of t. This was the signal. We know the conclusion that this is an energy signal. But apart from that, okay, graphically how to identify? Because we don't have time, we have to save maximum time in gate because time is money, guys. Okay, e to the power -80 signal, if you plot on the time scale, it will be like this. This is actually e to the power -80 का कर्व है, करेक्ट है? ये जो है वो e to the power -80 है, to which you are multiplying with u of t. You are multiplying with u of t, which is 1 for right hand side and which is 0 for left hand side, isn't it? So when you start multiplying, guys, when you start multiplying, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये कर्व है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कर्व है, यहाँ पर क्या है, 0 है, and guys, you are multiplying. So when you multiply, what you get on left hand side, you will get absolutely 0, because on left hand side u of t is 0. On right hand side, e to the power -80 is curve, decaying curve. On right hand side of u of t, it is 1. So curve into 1 becomes what? Curve. So you get a curve over here. So this is the characteristic, guys. This is a characteristic. Okay. Now from this characteristic,
Now from this characteristic, can I say this is a bounded signal, guys? Can I say this is a bounded? Because this is one of the significance or one of the identification of the energy signal. Yes or no? So this is what we call as a bounded signal, guys. So this is a bounded signal क्योंकि कहीं पर भी इसका एम्पलीट्यूड इंफिनिटी नहीं हो रहा है, isn't it? कहीं पर भी इसका एम्पलीट्यूड आप देखो इंफिनिटी नहीं है, ये स्टार्ट भी हुआ फाइनाइट वैल्यू पे और देन इट इज रीचिंग टू जीरो ओनली, देन इट इज रीचिंग टू जीरो ओनली, मतलब कहीं पर भी इसका एम्पलीट्यूड इंफिनिटी नहीं हो रहा है. Moral of the story, I can say this is a bounded signal. Now the question remains, if you remember on the last page I have written, okay, bounded signal, finite duration signal makes the energy signal. Yes or no? तो बाउंडेड सिग्नल तो है हमारा, लेकिन हमको ये देखना है कि हमने जो अब सिग्नल लिया है एनालिसिस के लिए, दैट इज e to the power minus 80 u of t, is it a finite duration signal? Can anybody tell me? Do you think this is a finite duration signal? Come on guys, can you tell me whether this is a finite duration signal or infinite duration signal? So देख के by observing you can understand, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कई स्टूडेंट्स को ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, बट लेट मी टेल यू गाइस, एक्चुअली ये सिग्नल ना जीरो पे जा रहा है, लेकिन कब? कम ऑन, जब t का वैल्यू इंफिनिटी होगा तब. इसका मतलब इफ यू काउंट दिस लेंथ, इट इज इनफाइनाइट. मॉरल ऑफ द स्टोरी, इट इज इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल. सो इन केस अगर फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस होता है तो ही हम उसको क्या कहते हैं? एनर्जी सिग्नल. So let me tell you the second case, guys. Okay. So if it is infinite length signal, then you have to see whether its amplitude is decaying or not. Yes, as you can see, even though the length is infinite, no problem. The amplitude is decaying in nature. Okay. But I would say decaying amplitude. So ये दोनों केस में वापस जो सिग्नल होता है वो एनर्जी सिग्नल है. Else it is always a power signal. Okay, so let's see guys. Okay, ये ऐसा कुछ सिग्नल है या फिर कुछ ऐसा सिग्नल है या फिर अभी हम लोग ने ये सिग्नल देखा. Okay, या फिर let's say you have this kind of signal. Okay, and we have to identify whether it is energy signal or power signal. Can anybody tell me if this is first, this is second, this is third, and this is fourth? Can you tell me which signals are energy signal, which are power signal, guys? Come on, very simple. So the very first signal that you can see, it is bounded signal also, it is finite duration also. Then definitely this is energy signal. There is no doubt. Second, same case as one, energy signal. थर्ड केस गाइस अभी दिखा हम लोग ने. ओके, फाइनाइट सिग्नल है लेकिन इनफाइनाइट ड्यूरेशन है, लेकिन डिकेइंग एम्पलीट्यूड है गाइस. दिस इज आल्सो एनर्जी सिग्नल. बट इफ यू लुक एट द फोर्थ सिग्नल गाइस, then as you can see it is bounded signal. Nobody can deny that, boss, this is bounded. Throughout it is bounded. Nowhere amplitude is becoming what? Infinity. So it is a bounded signal. But can you see it is infinite duration? So I will say it is bounded signal with infinite duration. Then the question is, do you think that during this infinite duration the amplitude is decaying? Answer is no. During this infinite duration, as you can see, amplitude is constant, guys. Amplitude is constant. It is not decaying in nature. If it is not decaying in nature, what does that mean? It means it cannot be power signal. So it is infinite duration with, I would say, a constant amplitude. And that's the reason why this is a power signal. So I hope guys, you are understanding this. Okay, how to identify what are energy signals and what are the power signals. Even by just observation also, you need not to really apply the formula. Just by observation also you can identify whether it is energy signal or power signal. Okay, now if I let's say talk about this signal, which is also called as an umbrella signal. As you can see,
even in this case, it is a bounded signal. Bounded because nowhere amplitude is becoming infinity. But let me tell you, the duration, if you see, it is infinite, because this will touch to zero when I'm sorry for that, when time approaches to infinity. Even on left hand side, this is reaching to zero only when time tends to infinity. So if you see lengthwise, guys, it is infinity duration. But can't you see it is, amplitude is decaying in both the sides. On both the sides, amplitude is decaying. And even this signal, it's said to be what signal? Energy signal. I hope you understand that. But if you let's say talk about this signal, this is popularly known as a signum function. I'm sure you know that. It is a signum function, guys. Okay. So as you can see, this is a bounded signal, guys. This is a bounded signal. And as you can see, it is infinite duration. लेकिन इस infinite duration के अंदर amplitude जो है, it is not decaying in nature. Therefore, this signal is also power signal. Okay. Or let's say, if you have some periodic signal like this, तो याद रखिए, all periodic signals, I repeat, all periodic signals are power signals. All periodic signals are power signals. Okay, don't ever forget that. Don't ever forget that, guys. So thank you so much for watching this video, guys. If you have problems, you can definitely text me over here and I'll just clear it out. Else, we will conclude this section. Thank you so much. So as I said at the end, all periodic signals are power signals. But vice versa is not true, guys. All power signals are not periodic signal, because as you can see, this is a power signal, but this power signal is not a periodic signal. Okay. So thank you so much for connecting, guys. So keep watching these videos, keep sharing, stay tuned to Ekeeda, subscribe to Ekeeda and keep sharing this. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Good night.